रेलेवेंट। उन्होंने कहा भारत हमारे लिए रेलेवेंट है, अगर आप हमें कहीं भेजना चाहते हो दिखाने के लिए तो हमें भारत लेके जाइए। तो उस समय से भारत में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इथियोपिया से रेगुलरली आती रही हैं, और अब तो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहे हैं। जो 2 साल पहले भी 50 एमपी इथियोपिया से आए थे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो मैंने सोचा मैं आपको एक ये दिलचस्प बात बता दूं। जी राहुल मिश्रा जी, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे प्रधानमंत्री की इस पहला जो इवेंट है आज का, हालांकि वो संसद को संबोधित करेंगे उसके बाद, लेकिन उससे पहले जो ये आप स्मारक का आप देख रहे हैं, ADWA स्मारक, उसका अवलोकन, और उसके बाद इस म्यूजियम के जरिए पूरे विश्व को ये संदेश देना कि भारत उपनिवेशवाद के खिलाफ जो संघर्ष है अफ्रीका का, उसके साथ खड़ा है। जी बिल्कुल, उपनिवेशवाद के और जो नौ उपनिवेशवाद है उसके खिलाफ भारत अपनी मुहिम छेड़े हुए है, और दुनिया के तमाम देशों के साथ, खास तौर से ग्लोबल साउथ के देशों के साथ ये एक फिर से एक रिकनेक्ट की अप्रोच है कि हम दुनिया के जो भी ताकतवर देश हैं, वो चाहे आर्थिक तौर पे या सामरिक तौर पे या सीधे इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहाने जो कोशिशें कर रहे हैं नौ उपनिवेशवाद की, उसके खिलाफ हम खड़े हैं और उसके खिलाफ हम साथ हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है जो प्रधानमंत्री की इस म्यूजियम विजिट से साफ दिख रही है कि भारत और इथियोपिया पुराने कल्चरली बहुत स्ट्रांग देश है, सिविलाइजेशनल स्टेट है भारत। इथियोपिया का भी बहुत बड़ा और बहुत ही रिच इतिहास रहा है, और दोनों देशों की जो अपनी स्वतंत्रता संप्रभुता को लेकर के जो कमिटमेंट है, वो भी इसमें हमें दिखता है कि इस चीज़ को भी हाईलाइट करने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि इन दोनों देशों का जो समृद्ध इतिहास है, एक गौरवपूर्ण जो उनकी जो पृष्ठभूमि है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बहुत ही दिलचस्प पहलू ये भी है कि इथियोपिया, जब पहली बार ग्रीक लोगों ने जब भारत को देखा तो उन्होंने कहा कि ये पूर्वी इथियोपिया है। तो इथियोपिया के रेफरेंस से हमें यूरोप ने एक ज़माने में देखा था, और वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोगों के, भारत और इथियोपिया दोनों के ही जो सांस्कृतिक पहनावे के तौर पे, मैं एंशिएंट टाइम्स की बात कर रहा हूँ, पुराने ज़माने में जो खाने पीने के ढंग थे, जो कल्चरल और सोसाइटल जो एस्पेक्ट्स थे, उनमें इतनी समानता है। लोगों के पहनावे के साथ साथ उनकी अपीयरेंसेस में भी इतनी सिमिलरिटी थी कि यूरोपियंस ने सोचा कि ये इथियोपिया एक देश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, और भारत जो है वो ईस्ट इथियोपिया है। तो इससे पता चलता है कि दुनिया कैसे हम भारतीयों को और इथियोपिया के लोगों को ट्रेडिशनली देखती रही है, और कैसे इन दोनों ही देशों में एक कनेक्ट है। और ये कनेक्ट सिर्फ पिछले 50 सालों में, 70 सालों में नहीं बना है। जैसे कि पहले आप भी ये बात कह रहे थे कि भारत और इथियोपिया की दोस्ती एक इस बात पे भी टिकी हुई है कि इथियोपिया का जब स्वतंत्रता संघर्ष हो रहा था तो ब्रिटेन के हवाले से ही सही, लेकिन भारतीयों ने भी उसमें एक योगदान दिया था कि इथियोपिया की स्वतंत्रता और उसकी संप्रभुता अक्षुण्ण रहे, और भारतीय फौजियों ने भी उसमें एक योगदान दिया ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। पिछले 75 सालों में भी जो हम देखते हैं डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट्स में, चाहे वो भारत का आईटेक प्रोग्राम हो या कैपेसिटी बिल्डिंग हो, हमेशा से ही भारत ने इथियोपिया के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स पे काम किया है। कैपेसिटी बिल्डिंग के एस्पेक्ट में मुझे लगता है ख़ास तौर से मेडिकल कॉलेजेस बनाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप करी, ग्लोबल साउथ की या नॉन अलाइनमेंट की जो हमारे कोऑपरेशन मैकेनिज्म थे उसमें इथियोपिया ने। राहुल जी, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं इथियोपिया की संसद, और थोड़ी देर में उनका वहां पर संबोधन होना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इथियोपिया की संसद, जिसे फेडरल पार्लियामेंट्री असेंबली कहा जाता है, वहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन। और आपको याद होगा कि कल ही इथियोपिया ने प्रधानमंत्री को अपना पहला, किसी भी वैश्विक नेता को दिया गया पहला राष्ट्रीय सम्मान, सर्वोच्च सम्मान निशान इथियोपिया से सम्मानित किया था। और आज सर्वोच्च तो
उसको नेशनल म्यूजियम लेके जाते थे, जहां पर हमेशा उनकी मुलाकात लूसी के साथ होती थी। लूसी एक स्केलेटन है, एक ह्यूमनॉइड का, जो 3 मिलियन साल पुराना है, और वो इथियोपिया की पहचान है एक तरह से कि इथियोपिया की जो संस्कृति और सभ्यता है कितनी पुरानी है। तो लेकिन ये जो म्यूजियम है ये उनकी नेशनल प्राइड है, बड़ा अच्छा भव्य म्यूजियम बनाया है उन्होंने। और बाहर जो आपने मॉन्यूमेंट दिखाया वो भी नया है, उसके ऊपर अफ्रीकन यूनियन का चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि ये केवल इथियोपिया की नहीं, अफ्रीका की एक इंपॉर्टेंट गाथा है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं वहां के पार्लियामेंट के बारे में, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। उनका जो पार्लियामेंट है उसमें भी 2 हाउस है। लोअर हाउस में 547 सदस्य होते हैं, अपर हाउस में तकरीबन 110 सदस्य होते हैं, उसको हाउस ऑफ फेडरेशन बोलते हैं। जब मैं वहां राजदूत था तो कई विदेशी लोग थे जो चाहते थे कि इथियोपिया को बताया जाए कि डेमोक्रेसी कैसे चलती है, और उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि इथियोपिया के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको कनाडा, यूके ऐसी जगह ले जाया जाए। सारे उनके तैयारियां हो गई थी, लेकिन इथियोपिया के जो स्पीकर थे और उनके जो सदस्य थे उन्होंने जाने से मना कर दिया। उनको पूछा गया क्यों, कहते आपकी जो डेमोक्रेसी है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं। तो उन्होंने कहा फिर क्या रेलेवेंट? उन्होंने कहा भारत हमारे लिए रेलेवेंट है, अगर आप हमें कहीं भेजना चाहते हो दिखाने के लिए तो हमें भारत लेके जाइए। तो उस समय से भारत में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इथियोपिया से रेगुलरली आती रही हैं, और अब तो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहे हैं। जो 2 साल पहले भी 50 एमपीज इथियोपिया से आए थे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो मैंने सोचा मैं आपको एक ये दिलचस्प बात बता दूं। जी राहुल मिश्रा जी, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे प्रधानमंत्री की इस पहला जो इवेंट है आज का, हालांकि वो संसद को संबोधित करेंगे उसके बाद, लेकिन उससे पहले जो ये आप स्मारक का आप देख रहे हैं, ADWA स्मारक, उसका अवलोकन, और उसके बाद इस म्यूजियम के जरिए पूरे विश्व को ये संदेश देना कि भारत उपनिवेशवाद के खिलाफ जो संघर्ष है अफ्रीका का उसके साथ खड़ा है। जी बिल्कुल, उपनिवेशवाद के और जो नौ उपनिवेशवाद है उसके खिलाफ का लीडर आता था तो उसको नेशनल म्यूजियम लेके जाते थे, जहां पर हमेशा उनकी मुलाकात लूसी के साथ होती थी। लूसी एक स्केलेटन है, एक ह्यूमनॉइड का, जो 3 मिलियन साल पुराना है, और वो इथियोपिया की पहचान है एक तरह से कि इथियोपिया की जो संस्कृति और सभ्यता है कितनी पुरानी है। तो लेकिन ये जो म्यूजियम है ये उनकी नेशनल प्राइड है, बड़ा अच्छा भव्य म्यूजियम बनाया है उन्होंने। और बाहर जो आपने मॉन्यूमेंट दिखाया वो भी नया है, उसके ऊपर अफ्रीकन यूनियन का चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि ये केवल इथियोपिया की नहीं, अफ्रीका की एक इंपॉर्टेंट गाथा है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं वहां के पार्लियामेंट के बारे में, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। उनका जो पार्लियामेंट है उसमें भी 2 हाउस है। लोअर हाउस में 547 सदस्य होते हैं, अपर हाउस में तकरीबन 110 सदस्य होते हैं, उसको हाउस ऑफ फेडरेशन बोलते हैं। जब मैं वहां राजदूत था तो कई विदेशी लोग थे जो चाहते थे कि इथियोपिया को बताया जाए कि डेमोक्रेसी कैसे चलती है, और उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि इथियोपिया के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको कनाडा, यूके ऐसी जगह ले जाया जाए। सारे उनके तैयारियां हो गई थी, लेकिन इथियोपिया के जो स्पीकर थे और उनके जो सदस्य थे उन्होंने जाने से मना कर दिया। उनको पूछा गया क्यों, कहते आपकी जो डेमोक्रेसी है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं। तो उन्होंने कहा फिर क्या रेलेवेंट? उन्होंने कहा भारत हमारे लिए रेलेवेंट है, अगर आप हमें कहीं भेजना चाहते हो दिखाने के लिए तो हमें भारत लेके जाइए। तो उस समय से भारत में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इथियोपिया से रेगुलरली आती रही हैं, और अब तो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहे हैं। जो 2 साल पहले भी 50 एमपीज इथियोपिया से आए थे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो मैंने सोचा मैं आपको एक ये दिलचस्प बात बता दूं। जी
राहुल मिश्रा जी, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे प्रधानमंत्री के इस पहला जो इवेंट है आज का, हालांकि वो संसद को संबोधित करेंगे उसके बाद, लेकिन उससे पहले जो ये आप स्मारक का आप देख रहे हैं, ADWA स्मारक, उसका अवलोकन, और उसके बाद इस म्यूजियम के जरिए पूरे विश्व को ये संदेश देना कि भारत उपनिवेशवाद के खिलाफ जो संघर्ष है अफ्रीका का, उसके साथ खड़ा है। जी बिल्कुल, उपनिवेशवाद के और जो नौ उपनिवेशवाद है उसके खिलाफ भारत अपनी मुहिम छेड़े हुए है और दुनिया के तमाम देशों के साथ, खास तौर से ग्लोबल साउथ के देशों के साथ ये फिर से एक रिकनेक्ट की अप्रोच है कि हम दुनिया के जो भी ताकतवर देश हैं, वो चाहे आर्थिक तौर पे या सामरिक तौर पे या सीधे इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहाने जो कोशिशें कर रहे हैं नौ उपनिवेशवाद की, उसके खिलाफ हम खड़े हैं और उसके खिलाफ हम साथ हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है जो प्रधानमंत्री की इस म्यूजियम विजिट से साफ दिख रही है कि भारत और इथियोपिया पुराने कल्चरली बहुत स्ट्रांग देश है, सिविलाइजेशनल स्टेट है भारत। इथियोपिया का भी बहुत बड़ा और बहुत ही रिच इतिहास रहा है और दोनों देशों की जो अपनी स्वतंत्रता संप्रभुता को लेकर के जो कमिटमेंट है, वो भी इसमें हमें दिखता है कि इस चीज़ को भी हाईलाइट करने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि इन दोनों देशों का जो समृद्ध इतिहास है, एक गौरवपूर्ण जो उनकी जो पृष्ठभूमि है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बहुत ही दिलचस्प पहलू ये भी है कि इथियोपिया, जब पहली बार ग्रीक लोगों ने जब भारत को देखा तो उन्होंने कहा कि ये पूर्वी इथियोपिया है। तो इथियोपिया के रेफरेंस से हमें यूरोप ने एक ज़माने में देखा था और वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोगों के, भारत और इथियोपिया दोनों के ही जो सांस्कृतिक पहनावे के तौर पे, मैं एंशिएंट टाइम्स की बात कर रहा हूँ, पुराने ज़माने में जो खाने पीने के ढंग थे, जो कल्चरल और सोसाइटल जो एस्पेक्ट्स थे, उनमें इतनी समानता, लोगों के पहनावे के साथ साथ उनकी अपीयरेंसेस में भी इतनी सिमिलरिटी थी कि यूरोपियंस ने सोचा कि ये इथियोपिया एक देश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में और भारत जो है वो ईस्ट इथियोपिया है। तो इससे पता चलता है कि दुनिया कैसे हम भारतीयों को और इथियोपिया के लोगों को ट्रेडिशनली देखती रही है और कैसे इन दोनों ही देशों में एक कनेक्ट है। और ये कनेक्ट सिर्फ पिछले 50 सालों में, 70 सालों में नहीं बना है। जैसे कि पहले आप भी ये बात कह रहे थे कि भारत और इथियोपिया की दोस्ती एक इस बात पे भी टिकी हुई है कि इथियोपिया का जब स्वतंत्रता संघर्ष हो रहा था तो ब्रिटेन के हवाले से ही सही, लेकिन भारतीयों ने भी उसमें एक योगदान दिया था कि इथियोपिया की स्वतंत्रता और उसकी संप्रभुता अक्षुण्ण रहे और भारतीय फौजियों ने भी उसमें एक योगदान दिया ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। पिछले 75 सालों में भी जो हम देखते हैं डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट्स में, चाहे वो भारत का आईटेक प्रोग्राम हो या कैपेसिटी बिल्डिंग हो, हमेशा से ही भारत ने इथियोपिया के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स पे काम किया है। कैपेसिटी बिल्डिंग के एस्पेक्ट में मुझे लगता है ख़ास तौर से मेडिकल कॉलेजेस बनाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप करी, ग्लोबल साउथ की या नॉन अलाइनमेंट की जो हमारे कोऑपरेशन मैकेनिज्म थे उसमें इथियोपिया ने। राहुल जी, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं इथियोपिया की संसद और थोड़ी देर में उनका वहां पर संबोधन होना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इथियोपिया की संसद जिसे फेडरल पार्लियामेंट्री असेंबली कहा जाता है, वहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन। और आपको याद होगा कि कल ही इथियोपिया ने प्रधानमंत्री को अपना पहला, किसी भी वैश्विक नेता को दिया गया पहला राष्ट्रीय सम्मान, सर्वोच्च सम्मान निशान इथियोपिया से सम्मानित किया था। और का लीडर आता था तो उसको नेशनल म्यूजियम लेके जाते थे, जहां पर हमेशा उनकी मुलाकात लूसी के साथ होती थी। लूसी एक स्केलेटन है, एक ह्यूमनॉइड का, जो 3 मिलियन साल पुराना है और वो इथियोपिया की पहचान है एक तरह से कि इथियोपिया की जो संस्कृति और सभ्यता है कितनी पुरानी है। तो लेकिन ये जो म्यूजियम है ये उनकी नेशनल प्राइड है, बड़ा अच्छा भव्य म्यूजियम बनाया है उन्होंने। और बाहर जो आपने मॉन्यूमेंट दिखाया वो भी नया है, उसके ऊपर अफ्रीकन यूनियन का चिन्ह लगा हुआ है।
क्योंकि ये केवल इथियोपिया की नहीं, अफ्रीका की एक इंपॉर्टेंट गाथा है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं वहां के पार्लियामेंट के बारे में, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। उनका जो पार्लियामेंट है उसमें भी 2 हाउस है। लोअर हाउस में 547 सदस्य होते हैं, अपर हाउस में तकरीबन 110 सदस्य होते हैं। उसको हाउस ऑफ फेडरेशन बोलते हैं। जब मैं वहां राजदूत था तो कई विदेशी लोग थे जो चाहते थे कि इथियोपिया को बताया जाए कि डेमोक्रेसी कैसे चलती है, और उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि इथियोपिया के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको कनाडा, यूके ऐसी जगह ले जाया जाए। सारे उनके तैयारियां हो गई थी, लेकिन इथियोपिया के जो स्पीकर थे और उनके जो सदस्य थे उन्होंने जाने से मना कर दिया। उनको पूछा गया क्यों, कहते आपकी जो डेमोक्रेसी है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर क्या रेलेवेंट? उन्होंने कहा भारत हमारे लिए रेलेवेंट है। अगर आप हमें कहीं भेजना चाहते हो दिखाने के लिए तो हमें भारत लेके जाइए। तो उस समय से भारत में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इथियोपिया से रेगुलरली आती रही हैं, और अब तो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहे हैं। जो 2 साल पहले भी 50 MP इथियोपिया से आए थे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो मैंने सोचा मैं आपको एक ये दिलचस्प बात बता दूं। जी राहुल मिश्रा जी, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे प्रधानमंत्री के इस पहला जो इवेंट है आज का, हालांकि वो संसद को संबोधित करेंगे उसके बाद, लेकिन उससे पहले जो ये आप स्मारक का आप देख रहे हैं, ADWA स्मारक, उसका अवलोकन, और उसके बाद इस म्यूजियम के जरिए पूरे विश्व को ये संदेश देना कि भारत उपनिवेशवाद के खिलाफ जो संघर्ष है अफ्रीका का, उसके साथ खड़ा है। जी बिल्कुल, उपनिवेशवाद के और जो नौ उपनिवेशवाद है उसके खिलाफ भारत अपनी मुहिम छेड़े हुए है, और दुनिया के तमाम देशों के साथ, खास तौर से ग्लोबल साउथ के देशों के साथ ये फिर से एक रिकनेक्ट की अप्रोच है कि हम दुनिया के जो भी ताकतवर देश हैं, वो चाहे आर्थिक तौर पे या सामरिक तौर पे या सीधे इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहाने जो कोशिशें कर रहे हैं नौ उपनिवेशवाद की, उसके खिलाफ हम खड़े हैं और उसके खिलाफ हम साथ हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है जो प्रधानमंत्री की इस म्यूजियम विजिट से साफ दिख रही है कि भारत और इथियोपिया पुराने कल्चरली बहुत स्ट्रांग देश है, सिविलाइजेशनल स्टेट है भारत। इथियोपिया का भी बहुत बड़ा और बहुत ही रिच इतिहास रहा है, और दोनों देशों की जो अपनी स्वतंत्रता संप्रभुता को लेकर के जो कमिटमेंट है वो भी इसमें हमें दिखता है कि इस चीज़ को भी हाईलाइट करने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि इन दोनों देशों का जो समृद्ध इतिहास है, एक गौरवपूर्ण जो उनकी जो पृष्ठभूमि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बहुत ही दिलचस्प पहलू ये भी है कि इथियोपिया, जब पहली बार ग्रीक लोगों ने जब भारत को देखा तो उन्होंने कहा कि ये पूर्वी इथियोपिया है। तो इथियोपिया के रेफरेंस से हमें यूरोप ने एक ज़माने में देखा था, और वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोगों के, भारत और इथियोपिया दोनों के ही जो सांस्कृतिक पहनावे के तौर पे, मैं एंशिएंट टाइम्स की बात कर रहा हूँ, पुराने ज़माने में जो खाने पीने के ढंग थे, जो कल्चरल और सोसाइटल जो एस्पेक्ट्स थे, उनमें इतनी समानता है। लोगों के पहनावे के साथ साथ उनकी अपीयरेंसेस में भी इतनी सिमिलरिटी थी कि यूरोपियंस ने सोचा कि ये इथियोपिया एक देश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, और भारत जो है वो ईस्ट इथियोपिया है। तो इससे पता चलता है कि दुनिया कैसे हम भारतीयों को और इथियोपिया के लोगों को ट्रेडिशनली देखती रही है, और कैसे इन दोनों ही देशों में एक कनेक्ट है। और ये कनेक्ट सिर्फ पिछले 50 सालों में, 70 सालों में नहीं बना है। ሚኒስትር ነረንድራ ሞዲ፣ የተከበራችሁ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት እንኳን በሰላም መጣችሁ። ከሁሉ አስቀድሜ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚያደርጉት የጋራ ስብሰባ ላይ ንግግር ለማድረግ
በመካከላችን ለተገኙት የህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ነሬንድራ ሞዲ እና ለልኡካን ቡድን አባላት እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩ የተሰማኝን ክብርና ደስታ በሁለቱም ምክር ቤቶችና በራሴ ስም እንዲገልጽ ይፈቀድልኝ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የተከበራችሁ የሁለቱ ምክር ቤት አባላት፣ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያና በህንድ መካከል ያለው ታሪካዊ ግንኙነት ረጅም ዘመናትን ያስቆጠረ ነው። የህንድ ሪፐብሊክና ኢትዮጵያ የረጅም ጊዜና ጠንካራ ወዳጅነት ያላቸው በባህል፣ በታሪክ እንዲሁም በኢኮኖሚና በፖለቲካ ዘርፍ ብዙ ትስስር ያላቸው ሀገራት ናቸው። የሁለቱ ሀገራት ትስስር በመንግስታትና በዲፕሎማሲ ግንኙነት ብቻ የሚገለጽ ሳይሆን ጠንካራ የሆነ የህዝብ ለህዝብ መሰረት ያለው ነው። ኢትዮጵያና ህንድ በፍጥነት በማደግ ላይ ያሉ በየአህጉራቸው ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ በብሪክስ፣ በዓለም አቀፍ ነን አላይን ሙቭመንት እና መሰል መድረኮች በጋራ የታዳጊ ሀገራት ድምፅ ሆነው የሚንቀሳቀሱ ሀገራት ናቸው። ክቡርነቶ ዛሬ ያደረጉት ጉብኝት በሁለቱ ሀገራት መካከል በፈጠራና በትብብር ላይ ትኩረት አድርጎ በመስራት ለመለወጥ ያለንን የጋራ ራዕይ ወደ ተሻለ ደረጃ ያሸጋግራል። ይህን አጋጣሚ ተጠቅመን ለህዝባችን የጋራ ብልጽግና እና ዘላቂ እድገት የሚያመጣ አጋርነት እምነት እንደምንገነባ ያለኝን እምነት የገለጽኩኝ ክቡር የህንድ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ነሬንድራ ሞዲ ለሁለቱ ምክር ቤቶች በንግግር መልእክት እንዲያስተላልፉ በአክብሮት እጋብዛለሁ። Your Excellency, Your Excellency, the Prime Minister of Ethiopia, Honorable Speakers of both Houses of Parliament, Honorable Members, Excellencies, and my dear sisters and brothers of Ethiopia. It is a moment of a great privilege for me to stand before you today. It is wonderful to be here in Ethiopia, the land of lions. I feel very much at home because my home state Gujarat in India is also home to lions. I'm honored to be here in this temple of democracy, in the heart of a nation with ancient wisdom and modern aspirations. And I come to you with deep respect for your parliament, your people, and your democratic journey.
On behalf of the 1.4 billion people of India, I bring greetings of friendship, goodwill, and brotherhood. Tena istilin. Salam. Honorable members, in this great building, your laws are shaped. Here, the will of the people becomes the will of the state. And when the will of the state is in harmony with the will of the people, the wheel of programs moves forward with hope and purpose. Through you, I am also speaking to your farmers in the fields, to the entrepreneurs building new ideas, to the proud women leading communities and institutions, and to the young people of Ethiopia who are shaping the future. I thank you for the immense privilege. Yesterday, I was also honored to receive the Grand Honor Nishan of Ethiopia from my dear friend, Prime Minister Dr. Abiy Ahmed. I accept this award with folded hands, with humility, on behalf of the people of India. Am Sagnalo. Honorable members, Ethiopia is one of the oldest civilizations in human history. Here, history is alive in the mountains, in the valleys, and in the hearts of the Ethiopian people. Today, Ethiopia stands tall because its roots are deep. To stand in Ethiopia is to stand where the past is honored, the present is full of purpose, and the future is welcomed with open hearts. The blend of old and new, this balance between ancient wisdom and modern ambition, this is the true strength of Ethiopia. The spirit of Medemer or synergy is very familiar to us in India. Like the monolithic churches of Lalibela, the ancient rock temples of Tamil Nadu in India are also prayers set in stone. We too are an ancient civilization, walking confidently into the future. With the call of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas, together for everyone's growth, with everyone's trust and effort. Our emotions for our motherland also reflect our shared perspectives.
India's national song, Vande Mataram, and the Ethiopian national anthem, both refer to our land as the mother. They inspire us to take pride in the heritage, culture, national beauty, and protect the motherland. Honorable members, science has traced some of the earliest footprints of our species in Ethiopia. When the world speaks of Lucy, of Dinkinesh, they are not speaking only of fossil. They are speaking of a beginning. A beginning that belongs to all of us, whether we live in Addis Ababa or in Ayodhya. In India, we say, Vasudhaiv Kutumbakam. The world is one family. It reminds us that beyond politics, beyond borders, beyond differences, we share a common origin. And if our beginning was shared, then our destiny must also be shared. Honorable members, India and Ethiopia share warmth in climate as well as in spirit. Nearly 2,000 years ago, our ancestors built connections across great waters. Across the Indian Ocean, merchants sailed with spices, cotton, coffee, and gold. But they traded more than goods. They exchanged ideas, stories, and way of life. Ports like Adulis and Dholera were not just trade centers. They were bridges between civilizations. In modern times, our relationship entered a new era. Indian soldiers fought alongside Ethiopians for the liberation of Ethiopia in 1941. Our formal diplomatic relations began soon after India became independent. But even before embassies were set up, our people had already started writing a new chapter together. Thousands of Indian teachers came to Ethiopia. They taught children in Addis Ababa, in Dire Dawa, from Bahirdar to Mekele. They reached Ethiopian schools and entered Ethiopian hearts. Even today, many Ethiopian parents speak warmly about Indian teachers who shaped the future of their children. And just
as Indian teachers came here, Ethiopian students also traveled to India, seeking knowledge and friendship. They went to India as students and returned home as the builders of modern Ethiopia. I am told that some of them are present here in this parliament right now. Including the Honorable Speaker Tagese Chapo. They have also played a special role in building our people-to-people ties because they introduced Ethiopian cuisine in India. In India, we also enjoy eating Sri Anna, millets like ragi and bajra. So, the flavor of Ethiopian taf is very comforting for us. And since we enjoy eating the Indian thali, the European bayanetu also feels very familiar to us. Honorable members, today Indian companies are among the largest foreign investors in Ethiopia. They have invested more than $5 billion in diverse sectors like textiles, manufacturing, agriculture, health, and more. And they have created more than 75,000 local jobs. But I'm sure we can all agree our partnership has a lot more potential. That is why Prime Minister Dr. Abiy Ahmed and I took a big step forward yesterday. We have decided to elevate our bilateral relationship to the level of a strategic partnership. This will unleash the potential of our economics through cooperation in technology, innovation, mining, sustainability, and clean energy. It will also secure the future of our peoples through cooperation in food security, health security, and capacity building. In addition, we will also enhance our trade and investment cooperation as well as on defense and security matters. Honorable members, as developing countries, we have a lot to learn from and offer to each other. Agriculture forms the backbone of our two nations. It feeds our people. It sustains our farmers. It connects tradition with innovation. We can work together to develop better seeds, irrigation systems, and soil health technologies. As climate change affects rainfall and crop cycles, we can share knowledge in climate resilient farming, from dairy farming to farm mechanization, from millet research to food processing.
Together, we can help our farmers prosper. Honorable members, in India, we have built a robust digital public infrastructure. It has transformed the way we deliver services and how people access them. Today, every citizen in India can use technology for payments, for identity, and for government services. More than half of the world's real-time digital payments now happen in India. Welfare benefits worth over $500 billion have reached hundreds of millions of beneficiaries directly in their bank accounts without leakages or corruption. 3 times every year, nearly 100 million farmers receive financial assistance at the click of a button. As you roll out the Digital Ethiopia 2025 strategy, we are ready to share our expertise and our experience with Ethiopia. And we are honored that you have picked India as a trusted partner to develop the data center for your foreign ministry. Honorable members, India is known as the pharmacy of the world. During the COVID pandemic, the entire world was worried. It was a very difficult time. Despite limited resources, we considered it our sacred duty to humanity to do everything possible to help others. India sent medicines and vaccines to more than 150 countries. It was India's proud privilege to supply Ethiopia with over 4 million vaccine doses. And our good fortune to do so in partnership with the WHO, led by Dr. Tedros, a proud son of Ethiopia, known in India as Tulsi Bhai. I'm glad that our healthcare cooperation is growing from pharmaceuticals to hospitals and from traditional medicine to telemedicine. We are committed to strengthen our health security cooperation further, from provisioning of new equipment in hospitals to capacity building to healthcare professionals. Honorable members, Ethiopia sits at a crossroads of Africa. India stands at the heart of the Indian Ocean. We are natural partners in regional peace, security, and connectivity. Our commitment to mutual security becomes stronger with the signing of the Defense Cooperation Agreement earlier this year. This arrangement focuses on closer military cooperation,
It includes collaboration in cybersecurity, in defense industries, in joint research, and in capacity building. I take this opportunity to thank Ethiopia for your solidarity after the terrorist attack in India in Pahalgam in April. I also thank you for receiving our all-party parliamentary delegation so warmly and for affirming the commitment of zero tolerance towards terrorism. Honorable members, as vibrant and diverse democracies, we both understand that democracy is a way of life and it is a journey. It is shaped sometimes by debate, sometimes by disagreement, but always by belief in the rule of law and the will of the people. Both our constitutions are reflects this spirit. India's constitution begins with the words, "We the people of India." Ethiopia's constitution begins with, "We the nations, nationalities and people of Ethiopia." Their message is the same. Our destiny is in our hands. This morning, I had the honor to lay a wreath at the ADWA Victory Monument. This monument is a timeless reminder of how Ethiopia's victory inspired the entire colonized world in its quest for dignity and freedom. And in these times of conflict and uncertainty, it is a reminder that the people of the global South can stand up for themselves. Honorable members, Mahatma Gandhi gave us the concept of trusteeship. We do not own this beautiful planet and its resources. Instead, we are trustees who must take care of them and pass them to our children. The spirit of trusteeship that guides India's Ek Ped Maa Ke Naam, a tree for mother. A tree for mother initiative is also reflected in Ethiopia's Green Legacy Initiative. Both our nations believed in caring for Mother Earth. Both believe in giving back to nature. Together, let us work on renewable energy and green jobs. Let us work on disaster-resilient infrastructure and biofuels. And let us raise a strong voice for climate justice. India will be happy to support Ethiopia's effort to give a powerful voice to the Global South at COP32 in 2027.
Honorable members, I am told that there is a saying in Ethiopia, when spider webs unite, they can tie up a lion. We too believe in India that मन मिले तो पर्वत भी रास्ता दे देते हैं. When hearts are united, even mountains give way. Indeed, solidarity is a strength and cooperation is power. And today, as nations of the global south, as ancient civilization, as friends, India and Ethiopia are standing together. We stand together as member of one family, and we work for a world that is more just, more equal, and more peaceful. It was here in Addis Ababa that the dreams of African unity found a home. I am told that many streets of this wonderful city are even named after African countries. On the other side of the Indian Ocean, it was in New Delhi that India was honored to welcome the African Union as a permanent member of the G20. Last year, we marked another historic step with the inclusion of Ethiopia as a full member of the BRICS. In fact, over the 11 years of my government, the connection between India and Africa has grown manyfold. During this period, we have exchanged more than 100 visits at the level of head of the states and governments. Honorable members, the global south is writing its own destiny, and India and Ethiopia share a vision for it. Our vision is of a world where the global south rises not against anyone, but for everyone. A world where development is fair, where technology is accessible, and where sovereignty is respected. A world where prosperity is shared and peace is defended. And a world where decision-making reflects today's reality, not the world of 1945. Because the world cannot move forward if its system remains locked in the past. That is why India has emphasized a global development compact. It will prioritize
technology sharing, affordable finance, capacity building, and trade of sustainable growth. That is why at the G20 summit in November, I called for an Africa Skill Multiplier Initiative to train 1 million trainers. It will build local capacities and help your efforts towards inclusive and sustainable development. Honorable members, my personal association with tea is well known, but it is impossible to come to Ethiopia and not mention coffee. It is one of your greatest gifts to the world. In an Ethiopian coffee ceremony, people sit together, time slows down, and friendship deepens. In India too, a cup of tea is an invitation to talk, to share, to connect. And just like Ethiopian coffee and Indian tea, our friendship is brewing strongest. Today, I stand before you among sisters and brothers with a deep sense of gratitude and bright hope for the future. The future is calling, and India and Ethiopia are ready to answer. Honorable members, as I conclude, I give you my word that we will walk together as equals. We will build together as partners. And we will succeed together as friends. Thank you for the honor of addressing this parliament. Thank you for your friendship. Thank you for your trust. Tabbaraku. Dena hunno. Am sagnalo. Thank you.
በዛሬው ዕለት በሁለቱ ምክር ቤቶች ስብሰባ ላይ ተገኝተው ንግግር በማድረግዎ በሁለቱ ምክር ቤቶች አባላትና በራሴ ስም ከፍተኛ ምስጋና እያቀረብኩ ክቡራን የምክር ቤት አባላት ከመቀመጫችን ተነስተን ሁለቱን ጠቅላይ ሚኒስትሮችን እንዲሸኛቸው በታላቅ አክብሮት ጠይቃለሁ። Your Excellency, Your Excellency, the Prime Minister of Ethiopia, Honorable Speakers of both Houses of Parliament, Honorable Members, Excellencies, and my dear sisters and brothers of Ethiopia. It is a moment of a great privilege for me to stand before you today. It is wonderful to be here in Ethiopia, the land of lions. I feel very much at home because my home state Gujarat in India is also home to lions. I'm honored to be here in this temple of democracy, in the heart of a nation with ancient wisdom and modern aspirations. And I come to you with deep respect for your parliament, your people, and your democratic journey. On behalf of the 1.4 billion people of India, I bring greetings of friendship, goodwill, and brotherhood. Tena istilin. Salam. Honorable members, in this great building, your laws are shaped. Here, the will of the people becomes the will of the state. And when the will of the state is in harmony with the will of the people, the wheel of programs moves forward with hope and purpose. Through you, I am also speaking to your farmers in the fields, to the entrepreneurs building new ideas, to the proud women leading communities and institutions, and to the young people of Ethiopia who are shaping the future. I thank you for the immense privilege. Yesterday, I was also honored to receive the Grand Honor Nishan of Ethiopia from my dear friend, Prime Minister Dr. Abiy Ahmed. I accept this award with folded hands, with humility on behalf of the people of India.
Am Sagnalo. Honorable members, Ethiopia is one of the oldest civilizations in human history. Here, history is alive in the mountains, in the valleys, and in the hearts of the Ethiopian people. Today, Ethiopia stands tall because its roots are deep. To stand in Ethiopia is to stand where the past is honored, the present is full of purpose, and the future is welcomed with open hearts. The blend of old and new, this balance between ancient wisdom and modern ambition, this is the true strength of Ethiopia. The spirit of Medemer or synergy is very familiar to us in India. Like the monolithic churches of Lalibela, the ancient rock temples of Tamil Nadu in India are also prayers set in stone. We too are an ancient civilization, walking confidently into the future.